નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 જેમાં પાઠ 4નો બીજો મુદ્દો આપણે જોઈશું. આપણે પેજ નંબર 21 પર પહોંચ્યા હતા, તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 21 ખોલી અને મારી સાથે ભણવા માટે તૈયાર થઈ જજો. पहला આપણે વાંચી લઈએ, પછી એનું ટ્રાન્સલેશન જોઈ લઈશું कि शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी. कि शास्त्री जी જ્યારે આપણા દેશમાં સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં પ્રવેશ કર્યો હતો ત્યારે તે એક સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી તરીકે હતા અને તેનો સમય કેવો હતો? તેની ઉંમર 17 વર્ષની હતી. गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे. गांधी जी ना आह्वान थी तेओ स्कूल छोड़ी अने बाहर आवी गया हता. इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की. त्यार पछी तेमने काशी विद्यालय में एमनी शिक्षा एटले के शिक्षण पूरु कर्युं. उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा था. તેમનું જીવન હંમેશા દેશની આઝાદીની સામાજિક કાર્યોમાં લગી રહેલું હતું. परिणामे यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए અને પરિણામ એ આવ્યું કે તેઓ સન એટલે કે ઈસવીસન 1926 માં તેઓ લોક સેવા મંડળમાં સામેલ થઈ ગયા. जिसके वे जीवन पर सदृश्य रहे, तेना ते जीवन पर ना सदृश्य रहा. इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया. त्यार पछी गांधीजीए शास्त्रीजीए तेमना जीवનમાં गांधीजीना विचारो अनुरूप तेमने काम आपवानु तेने शुरू कर्યું. यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया. त्यारथी शास्त्री जी ना जीवन में एक नवो अध्याय नो प्रारंभ थयो. सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम रूप उन्हें जेल जाना पड़ा. जो के ક્યારે કીધું કે સન 1930 માં નમક કાનૂન તોડવાનો કાયદાનું આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ તેમાં ભાગ લીધો અને પરિણામ સ્વરૂપે તેમને જેલમાં જવું પડ્યું. यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही. ત્યાર પછી આ જેલ યાત્રાની શરૂઆત થઈ. ત્યાર પછી સન એટલે કે ઈસવીસન 1942 માં તેમને ભારત છોડો આંદોલન તરફ ચાલતી પકડી. इन 12 वर्षों के दौरान के 7 बार जेल गए. जो आ 12 વર્ષના આંદોલનમાં આ 12 વર્ષમાં તેઓ કેટલી વાર જેલમાં ગયા? 7 વાર જેલમાં ગયા. કેટલી વખત? 7 વખત. इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी. जो आ उपरथी आपने अंदाज आवे कि तेमने आजादी मेळववा माटे કેટલી લગ્ની હતી. જોવો તેમને આઝાદી મેળવવાની. दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी. जो बीजी तेमने जेल यात्रा 1932 में किसान એટલે ખેડૂત આંદોલનનો ભાગ લીધો અને તેમાં તેમને જવું પડ્યું હતું. सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी. जो 1942 में તેમની જેલની યાત્રા 3 વર્ષની હતી. जो सबके लंबी जेल यात्रा थी, તે સૌથી લાંબી जेल यात्रा હતી. इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे रहे थे. કે આ આંદોલનમાં શાસ્ત્રીજી ગાંધીજીએ બતાવેલા જે રચનાત્મક કાર્યો હતા તેમાં લાગેલા રહેતા હતા. वहीं और दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे. सन
1935 में वह संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वह 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करते उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी अनमोल पर विशेष जोर दिया। जो ત્યાર પછી તેમણે શું કીધું કે કિસાન આંદોલનના શું બનાવવામાં આવ્યા? અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી કિસાનોની આ દશા જોઈ અને તેમણે કમિટી બનાવવાનું શરૂ કર્યું અને કમિટીના તેમને અધ્યક્ષ બનાવ્યા। પૂરી લગ્નથી તેઓ કામ કરે એટલા માટે તેના રિપોર્ટ પ્રસ્તુત કરવા પડતા, તેની જવાબદારી પણ તેમને સોંપવામાં આવી। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પેજ નંબર 22 पर। इसके बाद के 6 वर्ष तक वह इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्ति और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, તેમની પાસે ग्रामीण जीवनનો अनुभव હતો। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका के जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वह संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिक सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही गायने में यही से शास्त्री जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी साधारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालयों में तो लोकप्रिय मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहने हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी ने सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप में से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम के काम लिया।
तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, तो आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने की थी, जिसे आज याद रखने की જરૂરત है। જોયું તમે શાસ્ત્રીજીએ કેવા સરસ સરસ કામો કર્યા હતા કે શાસ્ત્રીજીએ જ્યારે જ્યાં યાત્રામાં શાસ્ત્રીજી ઈસવીસન 1930માં મીઠાનો કાયદો તોડ્યો, એને કારણે જેલમાં ગયા અને તેમને 1942 સુધી તેઓ કુલ 7 વખત જેલમાં જઈ આવ્યા હતા। હવે તેમને કેવા કેવા અનુભવ થયા હતા તો કે ઈસવીસન 1935માં તેઓ સંયુક્ત પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિના સચિવ બન્યા અને 1936માં તેમને ખેડૂતોની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવાની સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા। જો તેનો જે રિપોર્ટ તેમણે રજૂ કર્યો તેમાં જિમ્મેદારી પ્રથાનો અંત કરાવવા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। તેઓ 6 વર્ષ સુધી અલ્હાબાદની નગરપાલિકા સાથે પણ સંકળાયેલા રહ્યા હતા। આમ જુદા જુદા પદ પર રહીને કાર્ય કરતી વખતે તેમને ગ્રામીણ અને શહેરી જનતાની જુદી જુદી સમસ્યાઓથી માહિતગાર થવાનો અવસર મળ્યો। ઈસવીસન 1937માં તેમને સંયુક્ત પ્રાંતની વ્યવસ્થાપિકા સભાને માટે ચૂંટવામાં આવ્યા અને આ રીતે તેમને સંસદીય જીવનની શરૂઆત કરી। હવે સ્વતંત્રતા પછી તેમણે શું કર્યું તો કે દેશના સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી તેઓ ઉત્તર પ્રદેશ અને કેન્દ્ર સરકારના જુદા જુદા પદ પર રહ્યા અને કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે તેમણે પરિવહન, સંચાર, વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ અને ગૃહ મંત્રાલયની જવાબદારીઓ સંભાળી। દરેક પદ પર રહીને તેમણે પોતાના શાસકીય ક્ષમતાનો પરિચય આપ્યો અને તેમને દ્રષ્ટિકોણ અત્યંત વ્યવહારિક રહેતો હતો। 19 માસ સુધી પ્રધાનમંત્રી પદ પર રહી અને તેમણે ઉલ્લેખનીય સફળતા અને લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી હતી। હવે એમનો સંદેશ શું હતો તો કે શાસ્ત્રીજી કહેતા હતા કે તમારું કર્મ ક્ષેત્ર ગમે તે હોય, સૌથી પહેલા તમે દેશના નાગરિક છો। સંવિધાનને તમે કેટલાક અધિકારો આપ્યા છે તો કેટલા કર્તવ્યો પણ તમને સોંપ્યા છે। તમને જે સ્વતંત્રતા મળી છે તેનો ઉપયોગ દેશ અને સમાજના હિતમાં કરવો જોઈએ। બરાબર છે બાળકો? તો અહીંયા આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। આવતા વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસ જોઈશું। ધન્યવાદ।